You don't even realize you are wasting your life because wasting your life really feels like you are wasting your life. समझ में आया क्या बोला मैंने? देखो बच्चों, मैं ना actually I'll just keep the mic here. I was writing my diary, you know. So I realized, and I was going to bed actually. So I realized कि चलो एक ऐसी चीज़ के बारे में आज बच्चों को बताती हूँ जो कि वो कर भी रहे हैं बट शायद उन्हें समझ भी नहीं आ रहा कि वो हो रहा है उनके साथ. ओके, सो व्हाट इज़ हैपनिंग इज दैट वेस्टिंग योर लाइफ कैन एक्चुअली लुक लाइक वेकिंग अप एवरी मॉर्निंग, गोइंग टू कॉलेज, गोइंग टू वर्क, स्क्रोलिंग योर फोन, मीटिंग पीपल, वॉचिंग नेटफ्लिक्स, स्लीपिंग, and then again doing it again and again. You are busy, you are tired, you are doing things, but you are not actually moving. And one day when you're going to look back, you will realize something very terrifying, that you weren't living badly. You were just living on a kind of autopilot. So nobody warns you about that. So let me tell you things I would be very careful about if I were of your age. Okay? Number one, stop waiting for your life to begin. So you keep telling yourself, once this happen, I will start living properly. मैं तब खुश हो जाऊँगा, you know. Well, I will clear this exam, when I will get this job, when I will lose the weight, when I will have money, when I will move out of my house, when I will find right people, right friend, right husband, you know, when I'll be confident. No. So your life is not waiting for that moment. It is something you are already living the years, you know. You are going to remember this time. So stop treating today like a waiting room, okay? Number two, your phone is actually eating up your life in minutes. You realize it, you don't realize it, but it is the most frightening thing. That scrolling is doing a lot of damage which we don't realize. And 5 minutes become 20 minutes, become 1 hour becomes 3 hours, and then next morning you again do it. So you don't feel like you are wasting your life. You just feel like that you took a break, you know. That's why you will not even realize it. So tonight I want you to check your screen time report, okay? So do not just guess, look at the number, then multiply that number with 365 number of days, okay? So the number will actually tell you something you don't want to hear, okay? So you don't need to delete your phone, but you need to stop pretending that your attention is unlimited. What you repeatedly give your attention to is going to become your life. Okay, number 3 is stop spending your best years trying to impress people. आपको समझ नहीं आएगा आप कितनी लाइफ इस चीज़ में वेस्ट कर देते हो. You waste your energy thinking that what they will think, they will like me, will I look stupid, will they invite me, will they unfollow me, will they reply, and then you are busy managing their opinion in your own head. Okay, इसमें आप अपनी लाइफ को ख़त्म कर रहे हो. Most of the people you are trying to impress won't even remember you. एंड आपको भी याद नहीं होंगे आज से 5 साल बाद में. लेट मी टेल यू. नंबर 4, स्टॉप कंपेयरिंग योर टाइमलाइंस प्लीज़. लोगों को देख के कि वो अमीर हो गया, उसने शादी कर ली, उसकी जॉब लग गई, उसके मिलियन फॉलोअर्स हो गए, लेट देम बी. ठीक है, दूसरों की प्रोग्रेस देख के अपने आप को ये फील नहीं कराना है दैट आई एम लूजिंग इट ऑल इन माई लाइफ. यू हैव योर ओन लाइफ. Okay, so the less attention you will give to others, the more you will be able to give to yourself. Number 5 is don't let fear make your decisions, and this is actually a big one. So you are afraid that you will fail, so you don't want to do anything. You don't want to apply for that job. You are afraid that you will look stupid. That is why you don't want to go and speak. You are afraid that they will reject you, इसलिए आप पूछते ही नहीं हो. You are afraid that people will judge you, और इसलिए आप try ही नहीं करते हो. So eventually you convince yourself, maybe I don't want it, maybe you did, okay, you wanted it but you were just scared. So I want you to remember something. Regret is something which is going to be the most painful thing in the coming years. जैसे आप बड़े होते जाओगे, मतलब the more you will live your life. So regret नहीं होना चाहिए. Remember this, you deserve to know what could have happened if you would have tried. Okay, number 6 is stop waiting to become confident. ये एक बहुत बड़ा ट्रैप है बच्चों, इसमें मत फंसो. ये मत सोचो कि पहले कॉन्फिडेंस आ जाएगा फिर मैं करना शुरू करूँगा. एक्शन पहले होता है हमेशा. यू हैव टू स्पीक व्हेन यू आर नर्वस, यू हैव टू गो अहेड इवन व्हेन यू आर स्कैर्ड, यू हैव टू स्टार्ट इवन व्हेन यू हैव नो एक्सपीरियंस एट ऑल. आप फेल हो गए बट सीखोगे. यू विल डू इट अगेन एंड इवेंचुअली आपका जो ब्रेन है ना वो बोलेगा कि आई नो हाउ टू हैंडल डिफ़िकल्ट थिंग्स, मैंने की हुई हैं. ठीक है, सो कॉन्फिडेंस विल बी बिल्ट बाय योर एक्शन. नंबर 7 इज़ बी केयरफुल हु यू गिव योर ईयर्स टू. ठीक है, आपके जो लाइफ पार्टनर्स होते हैं, लोग जिनके साथ आप रहते हो, दे आर द पीपल हु विल एक्चुअली मेक यू फील अलाइव. इफ़ दे मेक यू फील स्मॉल, if they are trying to pull you down, if they are questioning your worth all the time,
maybe they don't deserve or this thing. And it can be anyone, it can be your parents, it can be your boyfriend, it can be your siblings, ठीक है. And you're allowed to leave the relationships that are damaging you, because देखो टाइम जो है ना वो रिफंडेबल नहीं है. सो एक अपने आप को इतना लायक बनाओ एंड जस्ट मूव आउट ऑफ दैट प्लेस विच इज़ पुलिंग यू डाउन. ओके, आई हैव सीन माई फ्रेंड्स हु आर कमिंग फ्रॉम अ लॉट ऑफ टॉक्सिक families, and it's okay to just leave those places. Number 8 is stop saying that I will do it later. कोई later नहीं होता है. Later is actually one of the most expensive words in the English language. I'll tell you. I will exercise later, study later, call them later, next month, ये वो blah, ठीक है. Suddenly you will become so old, बाबा बन जाओगे, ठीक है. बुढ़ी अम्मा देखो मेरे बॉल, sorry. So see, so do not postpone things. Go travel, even if it is not perfect, just do it. Okay, I have been to 13-14 countries. Do it, okay? It's worth it. Number 9 is build something that actually belongs to you. Your skill, your career, a body you are proud of, your business, your family. देखो बच्चों, हर चीज़ में हार्ड वर्क लगेगा, ठीक है. जो भी चीज़ आपको बिल्डअप करनी है ना, चाहे वो आपका स्किन केयर है, चाहे वो आपकी बॉडी है, एवरीथिंग इज़ गोइंग टू आस्क एंड डिमांड टाइम फ्रॉम यू. चाहे वो आपकी फैमिली है, जो ये आप सुंदर फैमिलीज फ़ोटो देख लेते हो ना कि 4 लोग हैं, 2 बच्चे हैं, 2 माँ बाप हैं, उसको उस लेवल तक पहुँचाने में बहुत मेहनत लगती है. लेट मी टेल यू, इट टेक्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, ओके, फ्रॉम बोथ द पेरेंट्स. उसके अलावा इफ़ यू वांट anything in life, you have to actually work hard for that, and you have to build it for yourself. And I think the last one is, please do not wait for a wake up call. This is the part I really want you to remember. You do not have to, you do not have to realize that how much time do you have, and ये आपको डराने के लिए नहीं है. But one day you are going to look back at your 20s, your 30s, your childhood. ठीक है. लोग बोलते हैं मुझसे कि मैंने आर्मी क्यों छोड़ दी, क्योंकि यार मैंने अपनी 20s में इतना घिस लिया था, एंड आई हैव सेव्ड इनफ फॉर माई सेल्फ, ओके, दैट मुझे ज़रूरत नहीं थी कि अभी जब फैमिली ईयर्स में मुझे अपने आप को, अपने बच्चों को, और वाइल देयर ग्रोइंग अप ईयर्स आई वॉन्ट टू बी विद दैम, तो ज़रूरत नहीं पड़ती है. आई स्टार्टेड अर्निंग एट द एज ऑफ 2021, ठीक है. सो आई हैड सेव्ड इनफ, आई हैव बॉट प्रॉपर्टीज़ फॉर माई सेल्फ. आप अपने लिए प्लान कर लेते हो चीज़ें, और ऊपर से फिर आप ऐसे तमीज़दार इंसान से शादी भी करते हो कि जो ये समझता है कि फैमिली इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट, ठीक है. एंड इट वॉज टोटली अ पर्सनल चॉइस. तो आई एम नॉट सेइंग कि जस्ट बिकॉज आई हैव लेफ्ट यू हैव टू लीव टू, बट रिमेंबर दिस, that sometimes you want to live something different, your priorities might change, and that's really okay. So I want you to remember is your life is happening in these ordinary days right now while you're watching this video, and maybe that's the uncomfortable truth you need to hear, that you will not have a different life, new life, okay? So you need to stop wasting the life which you already have. Put the phone down, call the person, start a thing, learn that thing which you have been postponing, apply, study, train, become your best version, travel, create. जो करना है करो यार, मतलब just do, man. The moment is your life. This is your life. Don't waste it. Hope this helps. Good night. Bye bye.